press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome to Phoenix Educare. Welcome to the second chapter of 10th Maharashtra State Board History. The chapter is Historiography, Indian Tradition. So in the second chapter or in the second part we will study about the historiography in the medieval period. So in the first part we have studied about the historiography in ancient period or ancient India. Now we will study about the medieval period. The style of the writing of Rajatrangi, The History of Kashmir by Kalhana. History of Kashmir is written by Kalhana. It is written in the book Rajatrangi. So this is the book written by Kalhana in the 12th century CE. 12th century CE means 12th century AD or CE means Common Era. It is quite close to the concept of modern historiography. So in the first chapter we have studied about modern historiography. We have studied what are the things we have to do when we are studying a modern historiography. We have to study the documents. We have to critically examine that. We have to study about those about coins, inscriptions, ancient documents, dynastic records, local traditions. All these things when we are studying, that is modern historiography. Ancient historiographers थे या ancient लोग थे ये कहीं सुनी बातों पे ध्यान रखते थे. They were they were not researching about anything. They were just believing in what their ancestors were telling. But modern historiography, we have to critically examine everything. So that was done by Kalhana when he wrote Rajatrangi. So Kalhana himself says that he wrote the text after critically examining various sources like inscriptions, coins, remains of ancient monuments, dynastic records and local traditions. See, whenever we are studying about this, when we get correct information about any place, so he wrote the history of Kashmir. In the medieval India, the historians in the courts of Muslim rulers were influenced by Arabic and Persian historiography. So in the medieval period, most of the part of the India was ruled by Muslim leaders or Muslim rulers or Mughal period or before Mughal period Sultanate was ruling in our country. So उनका जो history है जो जिस historiographers ने लिखा, they were influenced by Arabic and Persian historiography. So these kings also were from Arabic and Persian. They also came from Arabia or Persia. So उनके historians थे जिन्होंने उनकी history के बारे में लिखा. They were also influenced by Arabia and Persia or Persian historiography. Among them, Jalaluddin Barani holds an important place. In Tariq-e-Fizur Shahi, so this is the book written by Jalaluddin Barani. It's a book written by him. He has stated the purpose of historiography. According to him, the historian's duty is not limited only to record of the ruler's value and policies of welfare, but also should write about the ruler's failing and incorrect policies. So, ये जो historian है, Jalaluddin Barani. So, what was he thinking? See, he was thinking that historians should not only write about what are the good things that are done by the king. So, ये जो king का value है या उसने जो पराक्रम किया है या फिर जो बड़े-बड़े चीज किए हैं, we should not only write about that. We should also write about the failings of the king or what are the bad policies that are made by the king. So whenever we are writing good things and bad things, then we can analyze the work of the king. So this is important. There are some historians which are only writing good things about the king. But according to Barani, we should also write bad things about the king or what are the failings of the king, what are the bad things that are done by the king or bad policies of the king. Barani further states that historians should also take into consideration the impact of teaching of the wise, the learned and saints on the cultural life of the people. So he was saying that whenever historian is writing, he should study about the saints or wise people or good people or who are the learned people और जो पढ़े लिखे हैं उस टाइम के जो पढ़े लिखे लोग थे उनके बातों को भी हमें हिस्ट्री में लिखना चाहिए, हिस्ट्री में इंक्लूड करना चाहिए. सपोज इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट मराठा हिस्ट्री, सो मराठा किंगडम के टाइम जो पढ़े लिखे लोग थे या जो प्रीस्ट थे या संत थे या जो वाइज पर्सन थे, गुड पर्सन थे, उनके बारे में भी हमें लिखना है. उनको सोसाइटी के बारे में क्या सोचते थे, वी हैव टू इंक्लूड इन अवर हिस्ट्री बुक्स. सो इफ यू आर इंक्लूडिंग दिस, then we can study about, then we can understand about the historical things, or we can get a correct picture about what was the thinking of the good people in that period. We should not only write about the bad things that were done in that kingdom, we should also write about the good things. The Barani explained the scope of historiography. Thus, Barani explained the scope of historiography. So, book written by Barani is Tariq-e-Fizur Shahi. This is the important book written by Jalaluddin Barani.
For the historians in the Mughal court, praising the emperors and exhibition of loyalty became more important. So when Mughal Empire came to India, Mughal Empire जब इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ, तो मुगल जो हिस्टोरियंस थे, मुगल लीडर्स ने, मुगल एम्परर थे, उन्होंने भी अपने किंगडम के बारे में लिखा, उन्होंने भी अपने बुक लिखा है. लेकिन बाकी जो हिस्टोरियंस थे, जो मुगल एम्पायर के बारे में लिखते थे, ये लोग मुगल एम्पायर की बुराई नहीं करते थे. दे वर ओनली राइटिंग अबाउट द गुड थिंग्स दैट वर डन बाय मुगल एम्पायर, और दे वर only giving good angle about Mughal Empire. They were not talking bad about Mughal Empire, because these historians were under the control of Mughal leaders. Mughal leaders के कंट्रोल में थे, तो गलत कोई लिखेगा तो सजा देता था Mughal Empire. So they have to write about the good things only. For the historians in the Mughal Empire, they were praising the emperors and exhibition of loyalty. ये loyal थे, they were वफादार थे king से. So king जैसे अच्छा काम करेगा वही वो लिखते थे. The customs of adding suitable poetic quotes and beautiful lines was also introduced. So they were writing good poems, or they were writing beautiful. They were introducing beautiful pictures that were introduced during the Mughal period. See, then that was introduced by Babur, the founder of Mughal Empire. So Babur was the founder of Mughal Empire. He wrote an autobiography. उसने अपने बारे में बुक में लिखा. That book is called as Tuzuk-e-Babri. Tuzuk-e-Babri means letters of Babur or book written by Babur. The meaning of the word Tuzuk-e-Babri means book written by Babur or letters of Babur or thoughts of Babur. So बाबर ने अपने बारे में लिखा, बुक में लिखा, अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा. ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद के बारे में लिखना. So he wrote about him. So he included his pictures, or there were good poems that were written in these books. It contains the description of battles fought by him. Babur also recorded his minute observation of various regions and cities traveled by him, including the local economic, customs and the flora. So he wrote about flora. Flora का meaning होता है जो plants है, plants उसके kingdom में जो available थे या forest available थे. Fauna means animals, flora means plants. Then customs and traditions of the people. Also he wrote about the economic conditions of his area, of his kingdom. So this was also written by Babur. Also he wrote about the historical fights that he did with other leaders. ये सब उसने अपने बुक में इंक्लूड किया. द नेम ऑफ द बुक इज तुजुक-ए-बाबरी. यू कैन रिमेंबर बाबर से बाबरी. सो बुक रिटन बाय बाबर इज तुजुक-ए-बाबरी. दिस वाज अ बुक रिटन बाय बाबर. देयर वर अदर राइटर्स आल्सो हु वर राइटिंग अबाउट द मुगल हिस्ट्री. Al-Biruni wrote in Arabic about Indian knowledge and social life. In the following period, many books about the India were written by foreign scholars. So these are foreign scholars. बहुत सारे कंट्री से लोग इंडिया में विजिट करते थे. ये ट्रैवलर्स थे, ये इंडिया में ट्रैवल करते थे. ट्रैवल करने के बाद इंडिया को एक्सपीरियंस करते थे. इंडिया का सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, किंग का किंगडम कैसा है, ये चीजों के बारे में जानकारी हासिल करते थे. एंड दे वर राइटिंग देयर एक्सपीरियंस. So this experience is also important. This is also an indication of, or this is also helping us to study about Indian history. Among them, the name few. These are the foreign scholars. Hasan Nizami's Tajul Masir. This is the book written by Hasan Nizami. Minhaj-e-Siraj, Tabaqat-e-Nasri. These are all written by Arabic writers or foreign scholars. Tuzuk-e-Taimuri. This is autobiography of Taimur. Taimur, who was also known as, so उसने इंडिया पे आक्रमण किया था, वो इन्वेडेड इंडिया. तारिक के मुबारक शाही बाय याहया बिन अहमद सरहिंदी. देयर अकाउंट प्रोवाइड अस द हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन ऑफ सल्तनत पीरियड. ये सल्तनत पीरियड मुगल पीरियड के पहला था, मुगल एम्पायर के पहले था, तो उन्होंने सल्तनत पीरियड के बारे में लिखा. According to foreign travelers in India are also important. So these are foreign travelers. ये फॉरेन के ट्रैवलर्स है जो इंडिया में विजिट करते थे और विजिट करने के बाद इंडिया को एक्सपीरियंस करते थे और अपने अनुभव लिखते थे, अपना एक्सपीरियंस लिखते थे. सो दिस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर इंडियन हिस्ट्री. देयर वर मेनी ट्रैवलर्स, अमॉन्ग देम इब्ने बतूता, अब्दुल रजाक, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, बारबोसा एंड डोमिंगोस पीस. दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया in the medieval time. Their account provide us with the historical information of medieval India. Account मतलब उन्होंने जो बुक लिखा या उन्होंने जो एक्सपीरियंस लिखा. ईश्वरदास नागर, भीमसेन सक्सेना, खाफी खान एंड निकोला मेनुसी are among the historians of Aurangzeb's times, whose accounts are important source of Mughal history. So these are the people who wrote about history of Aurangzeb's times. औरंगजेब जब भी मुगल एम्परर था उसके टाइम पे इन लोगों ने हिस्ट्री लिखा. दिस इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट औरंगजेब्स हिस्ट्री और व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग औरंगजेब्स टाइम, सो वी हैव टू स्टडी द बुक्स रिटन बाय देम. सो दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री.
See, Abul Fazl's Akbarnama. This is the most important book written about Akbar. अकबर के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, दैट इज रिटन बाय अबू फजल. द नेम ऑफ द बुक इज अकबरनामा. इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी. दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट. ऑथेंटिक मतलब करेक्ट, जो करेक्ट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन लिखा है, कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं लिया, किंग की साइड नहीं लिया हुआ है. सो इट इज ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, correct information or valid information, authentic historical documents, and their scrutiny means checking whether the information is correct or whether the information is wrong. That is done by Abu Fazl when he wrote Akbarnama. Looked upon a devoid base of hence realistic. Devoid of base मतलब किसी की साइड लेना. सो जो अबू फजल ने अकबरनामा लिखा, इसमें अकबर की साइड लेके हिस्ट्री नहीं लिखा. ही क्रिटिकली एग्जामिन द डॉक्यूमेंट, ऑथेंटिसिटी चेक किया डॉक्यूमेंट का कि ये डॉक्यूमेंट वैलिड है क्या, करेक्ट है क्या, उसके बाद ही अपने बुक्स में इंक्लूड किया, उसके बाद ही हिस्ट्री लिखा. सो दिस इज नॉट, ही इज नॉट टेकिंग एनी साइड और ही इज नॉट बायस्ड हिस्ट्री. बखर इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ मिडिवल टाइम. ये बखर का होता है कि एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट होता है कोई भी किंगडम के बारे में या कोई भी एम्पायर के बारे में. एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट होता है, सब नोट करके रखा हुआ होता है, उसके किंगडम में क्या 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 हो रहा है, किंग ने कौन से डिसीजंस लिया है. दैट इज ऑल केप्ट एज अ रिकॉर्ड. दैट रिकॉर्ड इज कॉल्ड एज अ बखर. इट इज जस्ट लाइक अ बुक वेयर हैंड रिटन इंफॉर्मेशन इज देयर. बखर is an important type of historical document in medieval times. It contains elegies. Elegies means some information about the king and heroes, elegies of the heroes and stories of historical events. जो भी heroes थे. If you talk about Shivaji Maharaj, a history of Shivaji Maharaj, then there were many brave people in Shivaji Maharaj kingdom like Tanaji Malusare or Baji Prabhu Deshpande. So these are the two examples. So we will write about the heroic things that were done by them or heroic act that done by them. So this is also information that will help us to understand the Maratha history. Then heroes, stories of historical events, battles, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन. सो बड़े जो ग्रेट लोग थे उसके उस टाइम पे, तो उनके बारे में लिखा होता था. सो वाइल रीडिंग दैट वी कैन स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम. सो दिस इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. सो बखर इज ऑल्सो गुड सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन. मराठी बखर्स आर वेरियस टाइप्स. सभासद बखर was written by Krishnaji Anand Sabhasad during the reign of Chhatrapati Rajaram Maharaj. Chhatrapati Rajaram Maharaj was सेकेंड सन ऑफ शिवाजी महाराज. जब शिवाजी महाराज पहले किंग थे, शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज के बाद राजाराम महाराज. सो कृष्णाजी आनंद सभासद, ही रोट अबाउट द किंगडम ऑफ अबाउट द टाइम ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज. इट इज एन इंपॉर्टेंट बखर फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज. सो छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके रूल के बारे में, उन्होंने कैसा काम किया है, ये वो बखर में सब नॉलेज दिया हुआ है, सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. That was written when Rajaram Maharaj was the emperor or he was the Chhatrapati or he was the king of Maratha Empire. Bahu Sahibanchi Bakar describes the Battle of Panipat. So there was one important leader of Panipat, Battle of Panipat, Sadashirao Bahu. So Sadashirao Bahu, इनके बारे में उस बुक में लिखा हुआ है. So that is Bahu Sahibanchi Bakar describes the Battle of Panipat. Another Bakar called पानीपच्ची बखर. पानीपच्ची बखर मीन्स थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. जो मराठाज ने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फाइट किया था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. सो दैट इज पानीपच्ची बखर. इट इज ऑल्सो अबाउट द सेम इवेंट. होलकरांची कैफियत. सो होलकर वेर रूलिंग इन इंदौर में जो रूल करते थे, मराठा का ही पार्ट थे, बट दैट वाज कंट्रोल्ड बाय होलकर्स. सो होलकरांची कैफियत मीन्स होलकर्स ने जो रूल किया है, उनके किंगडम में कैसा रूल चलता था, दैट इज रिटन इन होलकरांची कैफियत. एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू मराठा रूल. सो दे वर ऑल्सो पार्ट ऑफ मराठास. जो मराठा रूल जब भी बड़ा हो गया, तो उसमें अलग अलग जगह पे उसके अलग अलग लीडर्स बन गए. जैसे नागपुर में भोसले लीडर्स थे, अब इंदौर में होलकर्स थे, या ग्वालियर के कोई अलग लीडर्स थे, पुणे के कोई अलग, पुणे में पेशवा का रूल था. सो देयर वर डिफरेंट लीडर्स एंड टू ओवरऑल द कंट्री, एंटायर कंट्री. सो इनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. सो होलकरांची कैफियत प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द होलकर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू मराठा रूल. बकर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स सच एज बायोग्राफीज ऑफ किंग का बायोग्राफी मतलब किंग के बारे में इंफॉर्मेशन. Then dynastic history. So about the dynasty, if you want to study about Chhatrapati Shivaji Maharaj,
So there will be a separate book written about Chhatrapati Shivaji Maharaj. So that will be the biopic of the king. Then if you want to study about entire Maratha kingdom, Maratha history, so पूरे हिस्ट्री के बारे में, पूरे डायनास्टी के बारे में पढ़ेंगे. जैसे हम शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राजाराम महाराज, उनके बाद जो लीडर थे उनके बारे में पढ़ना है. So that is dynastic history. Descriptions of events. So important events है, जैसे मराठा किंगडम में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उनके बारे में अगर पढ़ना है, so there will be a separate book. That is a separate बकर. और description of events, history of a sect, autobiographies regarding grievances based on mythological and state administration of king. So mythological stories या फिर जो administration है king का उसके बारे में लिखा हुआ है. Then history of a sect, जैसे if you talk about Christian religion, so Christian religion में दो अलग अलग सेक्ट है. जैसे एक सेक्ट है रोमन कैथलिक, दूसरा सेक्ट है प्रोटेस्टेंट्स. तो ये अलग अलग दो सेक्ट है. तो उनके बारे में अगर हमें पढ़ना है, प्रोटेस्टेंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, तो दैट इज रिटन इन अनदर बुक. रोमन कैथलिक के बारे में पढ़ना है, दैट इज रिटन इन अनदर बुक. सो दिस आर द वेरियस टाइप ऑफ स्पेसिफिक हिस्ट्री लिखा हुआ है बखर्स में. दिस इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मिडिवल इंडिया. मिडिवल इंडिया का जो हिस्ट्री है, तो वी हैव सीन मिडिवल इंडिया का पहले अरबिक थिंकर्स या अरबिक राइटर्स, पर्शियन राइटर्स, उनसे इन्फ्लुएंस हुआ था. जब मुगल्स आए तो मुगल्स के टाइम बेस्ड हिस्ट्री था कि किसी एक जो मुगल एम्परर था उसके बारे में ही सिर्फ उसके बारे में अच्छा लिखते थे, उसके बारे में बुराई नहीं करते थे. बट इफ देयर इज वन एक्सेप्शन, दैट इज अकबरनामा रिटन बाय अबू फजल. So that was authentic information. He used the authentic information. He critically examined everything and he wrote the unbiased history. कि किसी का साइड लेके हिस्ट्री नहीं लिखा. That was unbiased history. Then we studied about Bakkars. Bakkars are important documents for studying medieval India, medieval history. So we have seen there was one Bakkar that was written during the time of Chhatrapati Rajaram Maharaj. The name of the Bakkar is Sabasat Bakkar, that was written by Krishnaji Ananda Sabasat. Also we have studied about Bahu Sahibanji Bakkar, that, and also Panipatchi Bakkar, that gives the information about the third battle of Panipat. So this is the information that we have to study medieval India. So अगर medieval India का हिस्ट्री हमें पढ़ना है, so ये सब जो ट्रैवलर्स आए थे, मार्को पोलो या इब्न बतूता, उनके जो अकाउंट थे या उन्होंने जो लिखा था उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा. सो दिस इज गिविंग अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द मिडिवल इंडिया. तो ये डॉक्यूमेंट्स जब हम चेक करेंगे, जब स्टडी करेंगे, तो हमें मिडिवल इंडिया के हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा. सो होप यू हैव अंडरस्टूड द सेकंड पार्ट ऑल्सो. सो इन द थर्ड पार्ट वी विल स्टडी अबाउट द मॉडर्न पीरियड्स, हाउ हिस्टोरियोग्राफी हैज इवॉल्व्ड इन द मॉडर्न पीरियड. सी मॉडर्न पीरियड का जो हिस्ट्री है इंडिया का, दैट इज मोस्टली डोमिनेटेड बाय ब्रिटिशर्स. सो ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया पे रूल किया था तभी कैसा हिस्ट्री, तो ज्यादा डेवलपमेंट हो गया था. बट मोस्टली जो इंडिया का हिस्ट्री लिखा है, दैट वाज मोस्टली रिटन बाय ब्रिटिशर्स. ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री के बारे में ज्यादा लिखा है. फॉरेनर्स ने ज्यादा लिखा है, हमने बहुत कम लिखा है अपने हिस्ट्री के बारे में. सो होप यू हैव अंडरस्टूड द सेकंड पार्ट. इफ यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. ऑल्सो शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.